Welcome or welcome back. Today is the weekend, and with the topic of the video, you already know we are going Indian grocery shopping. A lot of ingredients that you don't really get it everywhere. East Ham, जहाँ काफ़ी सारा there's a small area which has a lot of Indian grocery, Indian sweets, Indian vegetables, Indian restaurants. तो आज हम वहाँ जा रहे हैं and I will take you along with me. And तो फिर चलो, let's go. तो हम पहुंच गए हैं शक्ति स्टोर्स एंड यहाँ आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ें मिलती है। ये वन स्टॉप शॉप है, फ्रॉम सब्ज़ी टू पूजा के बर्तन टू इवन fish, everything you get here. This is all types of dal if you see. मुझे actually तिल seeds चाहिए थे तो मैंने वो ले लिया. And you get almost everything from rava to different variety of dals, chana dal, moong dal, urad dal, मसूर दाल, मिक्स्ड दाल फॉर दैट मैटर. ये कॉर्न है एंड दिस इज़ अ मिक्स दाल यू गेट. एंड बहुत टाइप के दाल्स यहाँ पर थे. दिस इज़ छोले, चिकपीस जिसे कहते हैं. एंड देन देर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोबिया दाल, चना दाल. दिस इज़ रोस्टेड चना दाल. एंड ये है दलिया, मुझे दलिया भी चाहिए था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इडली, रवा के अलग अलग टाइप्स थे वहाँ पर. देर इज़ पोहा, देर इज़ वराइटी ऑफ पापड़ एंड साबूदाना. लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर हियर, बट मैंने कोशिश की है जस्ट टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गेट हियर. कुरमुरा भी मिलता है जिसे कहते हैं मूड़ी. यहाँ पे हींग भी मिलता है गाइस. सो यू ऑलमोस्ट गेट एवरीथिंग. पापड़ के यहाँ पे इतनी बड़ी वैरायटी थी. एंड बिकॉज इट्स अ साउथ इंडियन प्लेस, यू गेट नारियल, यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पापड़. बाय द वे यहाँ चोरा वड़ी एंड मूंग वड़ी भी थे. एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. ऑल्दो मुझे यहाँ इंडियन सॉल्ट का कुछ दिखा नहीं. सो या दैट वे वो एक चीज़ मैंने मिसिंग देखी, बट बाकी तो एवरीथिंग वॉज देयर. ये देखो पपड़म, मैंने ये पापड़ भी लिया था. एंड yes, these are the frozen meals. यहाँ पे पुट्टू से लगे, these are all ready made already guys. So ये पार्ले जी भी यहाँ है. and then these are cut vegetables. you get सांबर मिक्स, बहुत सी चीज़ें थी. ये मोनाको है. यहाँ पे खाकरा के बहुत ज़्यादा वैरायटी थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा. बट इतना ही है कि थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं और थोड़ा क्या कहते हैं उसे, देयर वाज मटरी एंड बहुत सारे चिवड़े. ऑल दीज थिंग्स वर देयर. या एंड देन कमिंग बैक टू सम सब्जियाँ. यहाँ पे भिंडी है, यहाँ पे बैगन है, तुरिया, दूधी, कड़ी पत्ता. बैगन के टाइप्स थे लिटरली. यहाँ पे लाल साग है, दिस इज़ करी लीव्स. एंड येस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इंडियन मिर्ची भी है. इतना ही है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बट दे वर क्वाइट फ्रेश गाइस टू टेल यू. दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑयल. मुझे सब कुछ मिल जाएगा, आपको हर टाइप का तेल एंड घी सब कुछ यहाँ मिल जाएगा. मुझे बस उनका फ्लेवर या उनका जो फ्रेग्रेंस है थोड़ा कम लगता है compared to the ones in India. These are the types of sauces, be it chings or Maggi. आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसालाज दैट वर देयर, बी इट बादशाह, MDH, एवरेस्ट एंड सम अदर नेम्स दैट आई ऑनेस्टली डोंट नो. बट मैं यहाँ बेसिकली, मेरा तो पूरे साल का स्टॉक है, मैं इंडिया से ले आई थी. बिकॉज आई नो यहाँ पे थोड़े से माइल्ड होते हैं जो मसाले होते हैं. तो मैंने कोशिश करी टू जस्ट शो यू व्हाट ऑल यू गेट हियर. ऑलमोस्ट सारे मसाले मिल जाएंगे आपको. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये थोड़े से माइल्ड होते हैं. ये सारे MDH है, सब कुछ है. मैं फोकस कर रही थी एवरेस्ट पे कि एवरेस्ट के कौन से अवेलेबल है, सो दैट नेक्स्ट टाइम ये साल भर का मेरा मसाला ख़त्म हो जाए तो मैं कौन से लूँ.
नाउ फाइनली यहाँ पे क्योंकि ये गणपति का टाइम था, नेक्स्ट डे गणपति था, तो यहाँ पे छोटे छोटे एकदम 5 इंच 6 इंच के मिट्टी के गणपति आए थे फ्रॉम इंडिया, तो वो भी यहाँ पे बिक रहे थे एंड इट वॉज वेरी वेरी क्राउडेड दैट डे. दिस इज़ लिटरली स्मॉलर देन माई रिस्ट, जस्ट 4-5 इंच के छोटे छोटे गणपति थे. दे वर वेरी इंटैक्ट इन अ बॉक्स. दैट्स वाई दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे. बट आई थिंक ओवरऑल आपको आइडिया आ गया होगा कि इस स्टोर में कैसे टाइप के स्टफ्स मिलते हैं इंडियन. यहाँ पे पान भी मिल रहा था, इमेजिन. यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं. यहाँ पे दीज आर ऑल द फ्रोज़न मच्छियाँ, फिश, एंड people who are vegetarian can skip this part. And you also get dried fish. यहाँ पे छोटे छोटे prawns है. Then there was also bombil, if you may know bombay duck, I think they're called. There's crabs, there's different kinds of other frozen fish. I've not tried any of that, but yeah, if you may like it, you've got everything here, by the way. I've come to this veg restaurant. It's an Indian restaurant, Anand Bhavan. Generally, I like onion rava dosa, but today I'm just sticking with rava dosa. That's for like 590 pounds, 595 pounds. And I've taken. But one good thing is every time we come here, we've tried and had something or the other. Like kabhi khana kha liya. Today I'm sitting and having snack, and I'm things for you to kind of grab through. Yes, they're expensive. Like an idli is like 540 pounds, which is 550 rupees. It's like 325. With India and you've moved here, you will know that it makes no sense for us to convert. But if you are from India and watching this video, please don't convert. Please understand कि हम जो लोग यहाँ होते हैं वो पाउंड्स में ही तो कमाते हैं, तो पाउंड्स में ही जाएंगे ना. अगर आपके लिए 10 रुपये या 100 रुपये इतने बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक इट्स मी व्हाटएवर, लाइक नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट चीप, तो वैसे यहाँ पे 1 पाउंड की वैल्यू इज़ एज गुड एज 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये. Actually, I don't like the chutney, but I do like the crispy rava dosa. Let's see how the sambar is. Good. It's really been such a hectic evening. बहुत वजन था यार. Hi Simba. Mama's home. हाँ जी. So the cart is completely empty. मेरे किचन का एक तरफ बहुत मेसी है and the other side is full of all the stuffs that I got, starting with करेला, आम, कच्ची मैंगोज. इसको कहते हैं पुई शाग in Bengali. मेरी नानी और मम्मी कहते हैं पुई शाग. I was like very happy to see this. This is rare. वहाँ पर मैं जितने बार भी गई हूँ ये साग मुझे कहीं नहीं मिला है. And it's a little sweet, very aromatic and sweet sabzi. Just a basic pumpkin and किसी चीज़ के साथ नमक हल्दी और 5 फोड़न डाल दो. It's the best thing. Then there's भिंडी, 2 लौकी, and methi. I wanted to make thepla, but I also wanted to make Gujarati muthiyas, so I'm confused कि मुझे डालना चाहिए नहीं, but I'm still going to do that. This is the लाल साग. ये भी दिख गई. I was very happy. Got it. करी लीव्स. इस बार मैंने करी लीव की पूरी गुच्छे निकाल लिए. जनरली मैं 50p वाला 60p वाला लाइक लिटरली 2-3 डंडी ले आती थी, बट देन आई रियलाइज कि एटलीस्ट ज़्यादा मिल रहे. आई नो ख़राब हो जाते हैं कभी कभी, बट देन स्टिल आई गॉट देम.
आई गॉट सम बनाना लीव्स एक्चुअली. पूजा का वक्त है, गणपति का वक्त है, तो यहाँ पर हर जगह यू गेट दिस बनाना लीफ. आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दिस बट यू गेट बनाना लीव्स. हम सोच रहे थे कि कल हम थाली वाली कुछ बनाएंगे एंड देन मे बी आई कैन सर्व इट इन दीज. Then there are these chow chow, and they're also. I got some Indian onions. Really needed them. Although यहाँ के onions भी अच्छे हैं. I got some nylon kind, not nylon safe, but उससे थोड़ा सा मोटा होगा. This सेव, मुझे सेव टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है. मैं बहुत दिनों से ये सेव ढूंढ रही थी. I got it, so I just picked it up. Then there's this ready sambar mix vegetables which are cut and mixed and ready to go. मुझे थोड़े थोड़े ये लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी because they are really expensive. One drumstick cost you like sometimes 3-4 pounds, which is expensive if you want to get pumpkin, brinjal, then drumsticks and whatever. So I'm the only one who likes sambar. So Aftab doesn't like sambar, तो मुझे ये लेकर उसके लिए लेकर कोई मतलब ही नहीं था. So I just got this quick veggie mix. I'm just trying. I hope the vegetables inside are, I know, not as fresh as these, but at least better. Then there is chakli. I was craving this since last time as well. I was contemplating loo nahi loo. इतने contemplation में मैंने डाल ही दिया cart में. Then I got these banana flour. In Bengali you call them mocha, or yeah. So I'm just gonna, for the first time, I'm gonna try and cook something out of this. I don't know what yet, but I definitely, this is my favorite sabzi that my nani makes. And there's a lot of cleaning work that needs to be done before you even cook these, so I'm going to take that. Then I got some lemongrass for some Thai curry that I make generally. Then I got some garlic, sesame seeds, ilchi kela. Aftab and I love it. मैंने बहुत कम वहाँ पे ये वाले केले देखे हैं. बड़े ही वाले होते हैं वो केरला स्टोर्स में जैसे होते हैं, but then this time I saw them and I just picked it up. They're really nice and we can finish this off in 2 days. And then I got these papadam. I want to try them. मैं generally पापड़ नहीं लाती हूँ. None of us eat it. But you know that sometimes जब आप थाली पका रहे हो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि यार 2 पापड़ मिल जाए, तो इसलिए वो 2 पापड़ के लिए मुझे पूरे पैकेट लेने पड़े. Anyways, I keep a stock of vegetable or chicken stock for masala or chicken dal that I make. Aftab loves it, and this time I got the vegetable stock cube instead of the chicken stock cube of Knorr. ऐसा नहीं कि ये कहीं और नहीं मिलता, ये हर जगह मिलता है, बस मिल गया तो मैंने उठा लिया. Then I got these typical chili vinegar chings के and Szechuan stir fry sauce. ये 2 चीज़ मेरे literally 2 साल चल जाएंगे. But then yes, you know that one time when you want to have something Chinese and these 2 things are not in your fridge, ऐसा लगता है यार बेसिक चीज़ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये स्टॉक अप करने के लिए लाया. Lot of garlic to cook, grated coconut, fresh one, and this is the one that I can freeze for later. I will use this in tomorrow's khana. I don't know what. And then I generally get very confused with curd here. मेरे को बहुत ज़्यादा confusion होता है. That is something that Aftab gets, but this time I just got the set natural whatever I'm hoping. This is dahi. And then again, Bombay में I would only have thumbs up, like literally when I'm having Chinese. But यहाँ आकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी आंखें ढूंढ रही है thumbs up को. So I got these mini bottles. Just 2 of them. मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है. And then there's Himalayan pink salt. And finally rusk. ये toast generally. So for me चाय के साथ एक biscuit या एक rusk is a must. Generally I have digestive biscuits. तो यहाँ आकर मैं सब कुछ try कर रही हूँ, पता नहीं क्यों. And then finally dalia or broken wheat gehu dalia. This is our staple every day. Aftab and I don't eat rice or anything else. Aftab used to not even eat this. He switched to dalia instead of jawar ki rotla since we moved here, just to help me and not, increase my burden of cooking him roti and all of that. So yeah, so this is our staple. तो 4-5 किलो हमको पूरे महीने लग जाता है दोनों को. And then I got this one. मैं बहुत like before I came here I was telling my mom मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं गरम रखूँ, but at the same time I want something
विच इज़ वेरी वेरी इंडियन, वेरी रॉ. तो मुझे ये चीज़ दिख गई एंड आई रियली लाइक्ड इट, सो आई पिक्ड वन. सो आई हैव द वन विद द लाइक अ कॉर्क वन. इफ यू कैन सी दिस, आई डोंट लाइक देम. आप इसमें बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ इसमें रख दो तो ये जल जाता है. एंड आई एक्चुअली burnt one of them, so it was a set of 3. Now it's only 2. Yeah, but this is something that I was really looking forward to. I really like it and it looks good on the counter table as well. And yeah, this is it guys. इतनी चीज़ें मैंने ली है आज के लिए. इतने सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिल हुआ है. To be honest with you, it's around 75 pounds. That's actually a lot. And why? Because हमारा generally आफ्ताब and I keep a target of not more than 40 pounds per week for our grocery, and that's like good luxury food. But क्योंकि हम इंडियन स्टोर में जा रहे हैं और एक एक करेला, एक एक दूधी मुझे 7-7, 5-5, 6-6, 8-8 पाउंड के मिल रहे हैं. सो अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लाती हूँ. बट दिस टाइम I wanted to stock up a lot of सब्जियाँ. मेरे को बहुत मन करा था because I love सब्जियाँ. तो I got a lot of Indian vegetables this time, जो कि half of the money actually went in these things. Yeah. And yeah, oh yeah, I also got these, hold on, I got these guavas जो मुझे बहुत प्यारे लगे यार. They were like nice and नरम but not very नरम. Like I don't like very ripe guava, but then these were like half green half yellow. मेरे को बहुत मन किए to pick them up. They are like small ones. I was thinking because वहाँ पे चीकू भी था. चीकू is my favorite fruit and basically I love all fruits, लेकिन चीकू मेरा favorite है. वहाँ देखा मैंने चीकू लूँ या गुआवा लूँ, again because they are very expensive and I was already like अरे यार बस अभी 80 पाउंड करने ही वाली थी मैं. And that's not really a nice thing to just go overboard, तो इसलिए I was like ठीक है चलो चीकू for the next time. Let's get some guava जो आफ्ताब भी खा सके. Yeah, that's all and I hope you guys liked my video for today. And finally here's Mr. Simba. Hi. Okay, hi. Simba, say bye. Thank you guys for watching and I hope you guys enjoyed this video. Again, oh yeah, bye. Simba, stop it. Also got chili idli. That reminds me of my college days where mummy used to, back in Bombay you have these Udupi restaurants in all the stations, right outside the stations. तो मेरी मम्मी हमेशा बोरिवली स्टेशन के बाहर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से मुझे इडली चिली खिलाती थी. एंड सॉ दैट इन द मेन्यू. मेरा बड़ा मन किया कि मैं मंगा लूँ. अब उसके बाद आई न्यू मैं शायद खा भी नहीं पाऊंगी, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, तो मैंने वो पैक करा कर घर ले आई. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई एंड हैव दैट फॉर डिनर tonight because Aftab has gone out to meet one of his colleagues for some drinks and dinner. So alright, see you next week and I hope you guys enjoyed the vlog and please do like, share, subscribe, you know the drill. Thank you guys, enjoy yourself and take care. नेक्स्ट डे था गणपति, गणेश चतुर्थी. मेरे घर आते हैं बॉम्बे में बापा, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर आते हैं बापा. हम बहुत ज़्यादा मिस आउट करे थे. ये मेरे इन लॉज हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर हमारी छोटी सी गणपति बापा की मूर्ति लगाई थी और मैंने थोड़ा बहुत प्रेपरेशंस किया था. एंड आई रियली मिस्ड. हमने तो कोशिश किया भोग वोग चढ़ाने की, बट ये दिस इज़ माई फैमिली एंड आई एम टोटली मिसिंग आउट. माई फ्रेंड्स सब आए थे, हम ही नहीं थे. इनफैक्ट हमारे सिम्बा और ऊनो दोनों को मेरी बहन ने और मैंने मिलाया. एंड या आई मिस इट ऑल. बहुत बुरा लगा बट इट्स ओके. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू मिस योर फैमिली. एंड देयर अगर आप वो देखोगे छोटे से पिक्चर में मैं और मेरे हस्बैंड है. गणपति बाप्पा मोरिया. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी ये फेस्टिव सीज़न अच्छी कटी हो.